Okay, beta, let's start today's class. Today we will discuss flowcharts. Flowcharts are basically the graphical representation of our programs which we are using. Okay, beta, basically we use flowcharts in our practicals as well. When we make our program, for those programs which we are making in a GW basic, we also need to make its flow chart, right? So what we will do, just look at here. This is our program number 1, which we already made. Have you remember all of you? Yes, sir. ओके अच्छा बेटा माइक आप लोगों के मैंने ना ऐसी सेटिंग पे रखा है कि जिस वक्त आपने बोलना होगा जस्ट उस वक्त इसको अनम्यूट कीजिएगा और जिस वक्त आप कोई जवाब नहीं दे रहे तो उस वक्त म्यूट पे ही रखिएगा खुद से ओके अच्छा सो this is our program number 1A practical 1A right so in this program what actually we have done uh, we basically use a for loop. And why we use this for loop? We use this for loop to print our name 10 times, right? The objective of this practical was that write a program to print your name 10 times, right? By using for next statement. So this is for and this is next. So by using for next statement. So if I just run this program, when I write here the run and enter, then you can see what happened. Whatever we actually write between the inverted commas, it will print 10 times, right? 1, 2, 3, and so on till 10 times. So that was the object of our practical 1A. Now what we will do, we will make a flowchart for this code, right? I'm gonna CLS and again F1. So we have to make a flowchart for this, right? We use a flowchart. I'm using here Google drawing software, right? But you don't need to be use this software. You just have to draw these all flowcharts on your practical file. When I will inform you that when you have to purchase a file, not right now, okay? Don't purchase it now. So we have to draw these all flowcharts on our practical file by the help of pencil only, right? Remember, you only use a pencil to make these diagrams. But now you can do practice on any extra sheet, right? You must have to do practice. Without practice, you will forget this, right? Okay. So here it is my code, and now I'm gonna make its flowchart, right? So for the flowchart, first of all, we will use always whenever we start our program, the first symbol always will be ellipse, right? I'm gonna use it. I'm gonna write start. Start, right? You can also use another software as well. I have made
already here. This is also Google second drawing software. Okay, let's see it. It's, I think, quite better. I already made here. You can see here. Look at the code, right? Look at the code here, and then it's flowchart. First of all, we have 10 CLS in our code. ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि हम अपने कोड को देखते हुए फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, फॉर 9 क्लास प्रैक्टिकल ओनली। अदरवाइज अगर मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है उसमें ये कि आप पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, देन यू विल राइट इट्स अ कोड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट बेसिकली हेल्प्स यू अ लॉट टू राइट योर कोड. सर सो हमारे 9 में प्रैक्टिकल है बेटा 9 में आपके सारे इंक्लूड हैं, 13 होते हैं, ठीक है. सो दिस इज प्रैक्टिकल 1A. कोर्स तो हाफ हो गया तो हाफ नहीं होंगे नो, प्रैक्टिकल हाफ नहीं, प्रैक्टिकल डिवाइड हो रहे हैं, बट टोटल 13 रहेंगे. अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि GW बेसिक अब 9 में रहेगी या वो मैट्रिक में ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो अगर मैट्रिक में ट्रांसफ़र होगी तो फिर आपके लिए कुछ और आएगा, बट स्टिल अभी तक यही है, तो इस वजह से हम GW बेसिक पढ़ रहे हैं. एनी अनदर क्वेश्चन? नो सर. ओके, गुड. सो अब देखें बेटा इस कोड को और इसके मुताबिक जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर वी यूज दिस ellipse or you can say another oval shape to start and to stop. We always use this symbol to start our flow chart and to stop our flow chart. So first of all, start. The next is, look at the first line, CLS. Remember, in our flow chart, we don't mention this line. I mean, we don't mention the CLS in our flow chart. CLS बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. तो प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर नहीं होता. हमेशा याद रखें, वी ओनली ड्रॉ अ मेन स्ट्रक्चर इन अ फ्लो चार्ट, राइट. हम बाकी जो उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते हैं अपनी प्रोग्राम में, जैसे हेडिंग हमने दी थी, लाइन उसके नीचे शो कर रहे थे, वी डोंट नीड टू मेंशन दैट ऑल इन आवर फ्लो चार्ट. Okay, so we will eliminate this CLS line. After that, at line number 20, we have for I is equal to 1 to 10. This is our loop, and for this loop, I mean for loop, we always use this symbol, right? It's available in the shape. Look at this one, right? Predefined process box. Its name is actually a predefined process box. So whenever you have this line for any variable is equal to a 1 to 10 or any boundary values, for this line you always use this predefined process box. Next we have a print I inverted commas name. Whenever you have a print command or input command, remember, always when you have a print or input command, you will use this parallelogram box, right? This is also here, shape, and this one, right? Parallelogram. So whenever you have any
input or print command, you will use this parallelogram. So I write here the print and name. I forget to write here this I as well. Now here print I inverted commas name. Then we have next I at the line number 40. We have next I, so we will write here next I in a rectangle box. Whenever you have any expression or formula, you will always use a process box, right? This is a process box and this is a predefined process box. What is the difference? These two extra bars. Okay. After that, we don't have anything else in our program, so we will just stop this. And another thing which I have used here, that is these two uh, circles here and here. Why actually I use this? Now just look at it, be careful. अगर हम अपने प्रोग्राम के बेटा स्ट्रक्चर को देखें गौर से, so what actually happened, just look at in the program CLS. First of all, the screen will be clear. Then for I is equal to 1 to 10. So by the help of this loop, what actually we do that this is I, so I is a variable, and in this variable the value will continuously change. So first time its value will be 1, and the uh, last time it will be a tenth. So when our program will run, so first time the value of this I variable will be 1, then next time it will be 1 incremented, so it will be 2, then next time it will be 3, then 4, then 5, and so on till 10. After 10 time our program will stop, right? So first time at this line I will carry the value 1, then it will move to the line number 30. Then what happened? Here it is print, and after print here we write here I variable without inverted commas. So what actually happened here, uh, because of this I, it will write the value, whatever the value in the variable I, it will be print that value here. And after that, within the inverted commas, we have written here the name. Here, instead of this NAME, you will write your own name, right? So whatever you will write here between the inverted commas, it will shown on your screen as it is, right? So it will show as like number 1 and then name. Then move to the 40. Here it is next I. So this line will, what actually it will do, it will jump this variable I to the this line where we have written 4, right? It means that it will jump to the line number 20. So because of this jump, now the value of I will be one more incremented, and now the value of I will be 2. So move to the line number 30. Now it will write print I variable, which means 2, and again name. Then again next I, it will again move this cursor to the line number 20. So now I value will carry the value 3, and so on. So this is what actually happen here. Look at, ये एक लूप बनता है बेटा, ठीक है? So for the same purpose in our flowchart we use these uh, uh, circles, right? These are actually known as on पेज connectors. फ्लो चार्ट की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ऑन पेज कनेक्टर. अब ज़रा लॉजिक को समझें. जो हमारे प्रोग्राम में हो रहा था वही मैं यहाँ बताता हूँ. प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10. आई में वैल्यूज को फर्स्ट टाइम क्या मिली 1,
उसने नेम को प्रिंट किया। जैसे ही फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ नेम, उसको नेक्स्ट आई मिला, तो नेक्स्ट आई बेसिकली क्या करेगा, उसको जंप करवा देगा। ठीक है, कहाँ करवाएगा? अच्छा, ये जो है ये चले हम यहाँ लगा देते हैं, तो आपको इसकी जो लॉजिक है वो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। लुक इट हियर नाउ। ओके, so next I will actually jump to the line number 20, and what actually at the line number 24 I is equal to this, so this next will jump to the section A of this same page. Why? Because ये सर्किल है ऑन पेज कनेक्टर, यानी उसी पेज पे ही कनेक्ट करेगा कहीं और। तो उसी पेज पे इसने जो कनेक्ट किया वो कहाँ कर दिया? जस्ट लुक एट द प्लेस। यहाँ से ये फ्लो आ रहा है और ये डाउनवर्ड साइड आ रहा है। इट मीन्स ये कहाँ आएगा? 4i इज इक्वल टू 1 to 10, एंड लुक एट नेक्स्ट आई से ये जाता कहाँ है? बिल्कुल यहीं जाता है, लाइन नंबर 20 पे। तो चूंकि फ्लो चार्ट में वी कैन नॉट मेंशन द लाइन नंबर्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस ऑन पेज कनेक्टर, राइट? एंड द अनदर थिंग इज, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर नोन एज फ्लो लाइंस, राइट? So we use these lines to mention that in which direction our data will move, or uh, which step will be followed next. So this is a flow chart of our program first A. It's here code, and it's a flow chart of this code. I again run this program, and it is a code जो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट टाइम ये चला, आई में वैल्यू क्या होगी? 1, look at here, then name, and then next I again ऊपर गया, I में value will move to the 2, so at line number 30 it will write 2 and name, and so on till 10. After 10 time it will automatically, your program will stop, right? So this is a flow chart of our first A practical. Is there any question? Yes class, your mics are on, you सर can ask me. क्या समझ में सर? है तो बिल्कुल ये सिंपल सी चीज़, इसमें कोई ऐसी हार्ड हाँ, एंड फास्ट ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। बिल्कुल भी आसान मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। I will provide you one more page inshallah as soon as possible, in which it's actually mentioned that which symbol we use for which process. So with that page, it will really helps you a lot to understand that why we use which symbol. We only have to remember the approximately 7 to 8 only symbols we are using in our flow chart. Just like look at here, the first one is this oval shape. Why we use? To start our program and to stop our program. Next is a predefined process box. Why we use this one? We always use this uh, only for next command, right? Only for loop, not next, right? Next के लिए अलग है। इसके बाद हमने यूज किया है print के लिए, this is a parallelogram. Why we use parallelogram? Whenever we have to write our print command or input command, right? So we use parallelogram. Next we are using this rectangle box. It is known as a process box, right? This one is a predefined process box, and this one is a process box, right? So why we use process box? Whenever we have to write our expression or equation, then we use this process box. Expression जैसे कि ये लिखी हुई है, ठीक है, या मैं यूं लिख दूं कि x+2, that is also expression. And what is equation? Equation means like जिसमें is equal to का भी sign आ जाए. Suppose that a is equal to 5, this is equation, ठीक है। कह सकते हैं आप इक्वेशन, एक्चुअली इक्वेशन तो नहीं है, इक्वेशन कुछ इस तरह होगी लाइक
a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो दिस इज अ इक्वेशन। लेकिन जब भी इज इक्वल टू साइन भी आ रहा हो बीच में हमारे पास, तो तब भी हम यही प्रोसेस बॉक्स यूज करेंगे। आफ्टर दैट अगेन देखें, स्टॉप किया मैंने प्रोग्राम को, तो अगेन आई यूज ओवल शेप एंड उसी पेज पे रहते हुए, यानी सेम अपने हम फाइल के जो पेज होगा उस पे रहते हुए सर अगर कहीं प्रीडिफाइंड और, बॉक्स यूज करते हैं। मैं बताता हूँ, पहले इसको ज़रा देख लें एक मिनट। अगर हम उसी पेज पे रहते हुए बेटा किसी जगह लिंक करना चाह रहे हैं, देन वी यूज़ ऑन पेज कनेक्टर, जैसे कि ये मौजूद है। फॉर ऑन पेज कनेक्टर वी यूज़ दीज सर्कल्स, राइट। ये काम हम बेटा अपनी जो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की फाइल होगी उस पे कर रहे होंगे, ठीक है। सपोज करें ये उसका एक पेज है, तो उसी पेज पे रहते हुए अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ्लो चार्ट को, तो हम ये ऑन पेज कनेक्टर यूज करेंगे। लेकिन सपोज करें हमारे पास एक अलहदा से पेज हो, एक और भी, ठीक है, एक अलहदा पेज हो, दूसरे पेज पे अगर हमें कुछ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर हम ये यूज नहीं करते, यानी ये सर्किल यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा जब वो डिस्कस होगा। अच्छा, आपसे आपका क्या क्वेश्चन था, दोबारा जरा पूछें। तो मैंने पूछा प्रीडिफाइंड बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, जैसे आपने बताया ना प्रोसेस बॉक्स इसलिए यूज करते हैं हम्म, इक्वेशन के लिए। okay. Beta, this is our predefined process box. We always use when we have this for loop. जब भी आपको प्रोग्राम में आपका for loop नजर आ जाए, बस याद रखिएगा वहां आपने क्या यूज करना है। You have to use a predefined process box. Got it? Okay. Any another question? आज माशाल्लाह आपकी क्लास में स्ट्रेंथ है अच्छी। पता है ना सबको एग्जाम्स सर पे हैं, तो आज आ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड ओपन द प्रोग्राम 1B। पहले से ही बना के मैंने कुछ रखे थे। ये दो बेटा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद हैं आपके गूगल ड्राइव में। आप आएंगे तो यहाँ से आप न्यू पे जाएंगे, मोर पे आएंगे, तो ये गूगल ड्राइंग वो सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और उसके अलावा ये डायग्राम्स डॉट नेट दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसपे अब जो डायग्राम बनी हुई है ऑलरेडी मेरे पास, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप यहाँ से ये जस्ट मतलब ऐसे क्लिक करें, आपके पास ये आ जाएगा पेज, और यहाँ पे आपने बनानी होती, ये सामने आपके पास शेप्स आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। वैसे आपने अपनी फाइल पे जो है हाथ से बनाने पेंसिल्स, ठीक है। शेप्स पे आएंगे तो ये फ्लो चार्ट के सैम्पल्स हैं। आप इजीली यहाँ से जो है कोई भी एक सैम्पल लिया और यूं करके ये ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें जो चीज़ लिखनी है यहाँ पे रहते हुए आप डबल क्लिक करें और जस्ट लाइक आपने लिख दिया स्टार्ट। बहुत सिंपल है। ये आप चाह रहे हैं कि सेंटर में है, तो यहाँ से आप अलाइन पे जाके सेंटर्स को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप जो भी शेप आपने ली, जस्ट लाइक मैंने पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं अलाइनमेंट भी बता रहा होता है कि ऊपर स्टार्ट के राइट हैंड साइड से ये अलाइन है, यानी इसके साथ टच हो रहा है, ओके। यूं भी अगर आप मूव करेंगे तो आपको बता देगा, और अगेन इस साइड से अब ये उसके अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये तो आपको शो कर रहा होता। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया लाइक ओनली प्रिंट ए, जस्ट ऐसे लिख दिया। अब इनमें फ्लो लाइंस आपने ज्वाइन करनी है, तो फ्लो लाइंस आप यहाँ से लेंगे, एरो वाला, यहाँ से प्रेस किया और यहाँ ला के छोड़ दी। सो इस तरह से जो है आप ये बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। सेकंड ये वाला सॉफ्टवेयर है जिसपे ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। नाउ लुक एट दिस वन इज फॉर प्रैक्टिकल 1B, ठीक है। मैं सामने पहले कोड आपके ओपन कर लेता हूँ।
अब देखें बेटा, this is our practical 1B, right? Just a minute, मैं इसको थोड़ा now it's better. Okay, so again CLS, then हमारे पास क्या आ रहा है, we have a heading, right? These are the formatting. So always remember, we don't required to use these formatting or headings in our flowchart, right? तो आप देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल भी नहीं की. Then again line, and after that we are using here like print I inverted commas में name, and then I is equal to 1 plus I. Look at this is what actually a equation जो मैं अभी बता रहा था, जहाँ is equal to sign आ जाती तो equation है. Then at the line number 60 we are using if I is equal to 10 then end. अगर वैल्यू जो I में वो क्या हो जाए 10 हो जाए तो प्रोग्राम क्या हो एंड हो जाए. अदरवाइज प्रोग्राम क्या करे, गो टू 40, इट मींस इस लाइन पे जंप कर जाए. तो अब देखें इसका फ्लो चार्ट हम किस तरह से बनाएंगे. जस्ट लुक इट हियर. अब यहाँ पे बेटा देखें आपको नजर आ रहा है, अगेन वही स्टार्ट किया आपने, ठीक है. आफ्टर दैट CLS नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे, ये 30 वाली लाइन भी नहीं. देन एट द लाइन नंबर 40 वी हैव प्रिंट एंड देन नेम है, ठीक है. आई, चले मैं आई भी यहाँ पे लिख देता हूँ, right? So now it's here. Why this shape? Because we are using here for print command. So always remember, whenever we have to require the mention print command, then we use a parallelogram for print and input both. दोनों के लिए क्या यूज होगा, parallelogram. Okay, then we have I is equal to 1 plus I. दिस इज अ इक्वेशन. और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन हो या कोई एक्सप्रेशन हो, देन वी यूज दिस प्रोसेस बॉक्स, राइट? सो आई हैव रिटन हियर आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एक ही बात है. देन 60 पे देखें ये डिफरेंट है. इफ आई इज इक्वल टू 10 देन है. अब इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये कहलाता है डायमंड बॉक्स, ठीक है. एक्चुअली ये डायमंड तो नहीं है, लेकिन ये डायमंड बॉक्स कहलाता है. कब यूज करते हैं, जब भी आपके पास बेटा प्रोग्राम में हो इफ कमांड. व्हेनेवर यू हैव इफ कमांड इन योर प्रोग्राम, देन यू विल यूज अ डायमंड बॉक्स फॉर दिस, राइट? तो डायमंड बॉक्स मैंने बनाया और उसमें मैं क्या लिखूंगा, इफ आई इज इक्वल टू 10 देन. बस यहाँ तक लिखेंगे, ये एंड ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. क्यों नहीं लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा. Okay, beta, this is a diamond box. We use this with the if command. और if command basically है क्या, वो है condition, ठीक है. if is a conditional base. if के जरिए आप बेसिकली क्या करते हैं, आप कंडीशन बता रहे होते हैं. और यहाँ पे भी कंडीशन ही बताई जा रही है कि if I is equal to 10 देन क्या करे, वो एंड कर दे. और अगर आई में 10 वैल्यू नहीं होती तो फिर क्या करें, वो नेक्स्ट लाइन में हमने मेंशन किया हुआ, दैट इज गो टू 40. सो यहाँ पे ये कंडीशन है. सो फॉर इसमें दिस, आपने यूज किया. यस, इफ क्यों यूज किया बेटा, ये जो हमारे पास प्रोग्राम 1 का बी है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि राइट योर प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम बाय यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट. पार्ट 1 में क्या था, बाय यूजिंग फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट. और पार्ट बी में क्या है, बाय यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट. तो इफ देन स्टेटमेंट यहाँ यूज किए, काम ये भी सेम कर रहा है, वही 10 टाइम आपका नेम प्रिंट करे. तो इफ की कमांड जो बेटा मैंने यूज की उसके लिए डायमंड बॉक्स हुआ. अब इसको जरा गौर से समझें, यहाँ पे कंडीशन कैसे चल रही.
इफ आई इज इक्वल टू 10 देन, अगर तो वैल्यू 10 हो जाती है, इसकी दो कंडीशन निकलती हैं, एक नो और एक यस। इफ द कंडीशन इज यस, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 10, देन व्हाट योर प्रोग्राम विल डू, इट विल स्टॉप। ठीक है, ये तो ये वाली कंडीशन मीट कर जाएगी। इफ आई इज इक्वल टू 10 देन एंड मीन stop the program. But if your condition is not true, it means now the value of I is not 10, तो फिर प्रोग्राम क्या करे? Then it will move to this no, और ये no क्या कर रहा है? ये चीज go to 40, 40 पे क्या कर रहा था, फिर कहाँ जा रहा है, गौर से देखिएगा, ये जा रहा है print I name। सो हम क्या करेंगे, इसको ऑन पेज कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, और ये कहाँ जाके कनेक्ट होगा, ये जो प्रिंट आई नेम है यहाँ ऊपर। तो ये बेसिकली यही प्रोग्राम की क्या है, फ्लो चार्ट आ गया हमारे पास, दैट इज एक्चुअली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर दिस सेम प्रोग्राम। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? यस क्लास, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? सर इसमें इफ आई इक्वल टू 10 देन अगर सही होगा तो यस यस पे चला जाएगा, अगर सही नहीं होगा तो दोबारा ऊपर चला जाएगा। हाँ, हमारे प्रोग्राम की लॉजिक की इस तरह की हमने बनाई है कि इफ द वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 10 then it will end, otherwise it will move to the next line which is line number 70, and 70 पे से क्या मिल रहा है, go to 40, तो 40 पे jump कर जाए। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में नेक्स्ट आई था, नेक्स्ट आई की वजह से it will always jump to the line where the word FOR 4 is written, तो वो वहां चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने 4 का लूप तो नहीं यूज किया, देन सो फॉर दैट वी यूज गो टू, और गो टू के आगे जो भी आप लाइन नंबर लिखते हैं, इट विल जंप टू दैट लाइन। ये नाउ जो क्लियर गोटू बेटा? वाली है ना, ये नहीं लिख सकते फ्लो चार्ट में? अगेन रिपीट करो आपसा, क्या क्वेश्चन है? सर ये जो गोटू वाली लाइन है, ये अपने फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं? गो टू वाली लाइन नहीं, ये नहीं लिखते हम। इसके लिए देखें ना, ऑन पेज कनेक्टर यूज किया मैंने, वो काम सेम कर रहा है। जैसे वहां 70 पे गो टू 40 पे लेके जा रहा है, तो मैंने कंडीशन नो पे क्या कर दिया, ऑन पेज कनेक्टर लगा दिया, और सर्किल पे से ए दिया नेम, और सेम नेम से हम ऊपर से उसका फ्लो लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे। सही है सर। जो आपने इक्वेशन के लिए यूज किया है तो वो प्रोसेस बॉक्स है ना? जी बेटा, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, चौड़ा ज्यादा हो गया शायद। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोग्राम भी देखें दोबारा से, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने दोबारा से आज दोनों प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। अगर किसी को प्रीवियसली क्लियर नहीं भी हुए थे, तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस। और वी आल्सो डिस्कस अवर फ्लो चार्ट, program 1A and program 1B flowchart. Okay, fine beta. Is there any another question? ये सारे प्रोग्राम वही है ना जो आपने हमें एक वर्कशीट दी थी प्रोग्राम की? Exactly. In 8th class, previous. वो उसमें सारे 13 प्रोग्राम थे सर? No beta, I think I have provided only 1A, 1B, 2, 3A, 3B, or maybe 4A, 4B. हमने सारे तो नहीं दिए थे आपको, आई थिंक सिर्फ 3 तक दिए थे। और 1A होता है, 1B होता है, प्रैक्टिकल 2 का एक ही है सिर्फ, and then after that for practical 3 it's again A and B part. Okay, clear beta? Any question?
चलें ठीक है बेटा. So inshallah we'll meet again in the next class. So till then, take care. Allah Hafiz.